Yogah Karmasu Kaushalam. A very good afternoon to all of you, dear participants. On behalf of HRDC Gujarat University, I'm here to introduce the speaker for today's session, Dr. K.C. Raval. Dr. Kaushik Kumar Chimanlal Raval is Professor and Director of University School of Law, Gujarat University. He has guided innumerable students as part of the curriculum of LLM. 15 students completed their PhD under him, and 4 scholars are doing their research on various socio-legal issues under him. Dr. Raval has delivered many lectures for training programs and refresher courses for judges and government officers on a ranging topics on labor law, industrial relations, human rights, criminal law, child and human rights, etc. Some of the institutions where he has rendered his valuable insights are Sardar Patel Institute of Public Administration, Ahmedabad, Gujarat State Police Academy, Gandhinagar, Kashmir University, Srinagar, Guwahati University, Assam, etc. Dr. Raval has published 75 articles and research papers in Gujarati and English in legal and general magazines. He has 12 books to his credit. Dr. Raval has visited many countries, like USA, Nepal, etc., as part of University Grants Commission review team and as a university committee member, as well as a participant in international conference. Dr. Raval has been a Gujarat University court member, member of Executive Council, member of Academic Council, Gujarat University, member of Board of Studies of several universities. Recently, he has been appointed as an external member of School Board of Social Sciences, Nehu Shillong at Meghalaya. He is also the life member of Indian Society of Criminology and Indian Sociological Society, to name a few. I welcome Dr. Raval and request him to speak on Crime Against Women, a sociologic study. Thank you, Madam Soma Chaudhary ji. And now the topic is very common, but I will discuss with a different angle. So we got depth of the issues and try to solve the issues which is faced by so many women in India, particularly and generally those who are weaker in the sense of economic, in the sense of physics, in the sense of minority, or in the sense of economic status. So now the thing is, day by day, if we read the newspaper, and those who are fully sensitized, they never want to read the newspaper in the morning. ऐसा क्यों होता है? हम पहले देखें इतिहास की ओर थोड़ी नजर लगाए तो पहले हमारे यहाँ सरस्वती goddess of knowledge, Lakshmi ji goddess of wealth, Durga goddess of power are respected. लेकिन हमारे आज समाज में क्या हो गया है, महिला बोले तो हमारे सामने एक सिनोनिम आ जाता है कि विक्टिम, हाईली एक्सप्लॉइटेड विक्टिम इन द सोसाइटी. क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों परिवर्तन आ गया? नेगेटिव परिवर्तन क्यों आया? ये हमें एक बार सोचने के लिए मजबूर करता है. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने तरक्की नहीं की है. हम लोगों ने कई जगह पे तरक्की की है और कई जगह पे हम बहुत पीछे भी पड़े हैं. देखिए तो ये वोटिंग राइट जो हमारे यहाँ कई राज्यकर्ता ऐसे हो गए जो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर शासन किया है, लेकिन इंग्लैंड देखा जाए तो 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोटिंग राइट मिला. यहाँ उससे पहले हमारे यहाँ महिलाओं को तो राइट टू सिलेक्ट देयर लाइफ पार्टनर, स्वयंवर हो जाया जाता था. महिला अपनी पसंदगी का काउंटर पार्ट सिलेक्ट कर सकती थी. लेकिन आज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे कौन सा मायना काम करता है, वो सब हमें देखना पड़ेगा. तो ये जो सारी बातें हैं वो एक सोसाइटी का, हमें एक सोसाइटी का मुंह आईने में दिखाता है कि वेयर वी आर, हम कहाँ है. हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई समाज कैसा है वो देखने के लिए वो देश में जाने की भी जरूरत नहीं है. व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द सिटीजन आर फेसिंग, what is the problem are faced by the national of this country, then you come to know how the condition the people are residing.
तो हमारे यहाँ बच्चों को देखा जाए या महिलाओं को देखा जाए तो उसकी हालत क्या है, वो एक बार हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। ऐसा नहीं है कि कहीं जगह पे नहीं है, हर जगह पे, हर क्षेत्र में जैसे जैसे हम साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल तरक्की कर रहे हैं, इतना ही हम नेगेटिव बाबतों में भी तरक्की कर रहे हैं, यानी कि हम पीछे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि सोक्रेटिस ने कहा है कि समाज समझू लोगों का होता है। those who are prudent can establish the society. So whether we have a prudent society or we have a barbaric society, why such thing happen? And fortunately, such type of situation compel me to do MA with sociology. Then I try to understand the social ideology and read my sociology after completion of my PhD in law faculty. So ऐसा परिवर्तन क्यों आ रहा है? ऐसे हम बोल सकते हैं कि change is a universal nature. Everything is changing except the change. परिवर्तन कायमी है, लेकिन जो परिवर्तन है वो कैसा आएगा वो समाज तय करता है, वो रिलेवेंट सोसाइटी है वो तय करती है। जो उसको एक्सेप्ट करेगी तो वो परिवर्तन चलेगा, नहीं तो वो परिवर्तन में भी और परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमारे यहाँ महिलाएं यूएन में भी जा चुकी है, हमारे बड़ा प्रधान भी बन चुकी है, राष्ट्रपति भी बन चुकी है, गवर्नर भी बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी है। अरे आजकल महिलाएं बॉर्डर के ऊपर भी काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले नए नजीक के भूतकाल में भी जजमेंट दिया है, नाउ शी मे बी आल्सो अलाउड टू हैव अ परमानेंट कमीशन इन द आर्म फोर्सेस। सो द फाइटिंग फोर्स में भी है। पहले तो सिर्फ नर्सिंग तक सीमित थी, अभी तो वो फाइटिंग फोर्स में भी सीमित है, और अपने अटारी बॉर्डर पे जाए तो जो गार्ड ऑफ ऑनर है वहां भी हमारी बहनें कार्यरत है। लेकिन ये तो एक क्या है, दिस इज वी कैन से इट इज वन सिल्वर लाइन जैसी बात है। आम देखा जाए तो क्या पोजीशन है, तो वो देखना हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा हम हिस्ट्री के ऊपर नजर डालेंगे। तो महिलाओं को कानूनी तरीके से देखा जाए तो पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है। कानून में महिला और पुरुष को कोई भी भेदभाव रखा नहीं गया है, बल्कि महिला अपनी शारीरिक तफावत होने के कारण ड्यू टू सम बायोलॉजिकल डिफरेंसेस they are given more rights, and which is mentioned under the article 53 of Constitution of India as a fundamental right. So the state can make a special law for protection and promotion of women right as well as the child right, even though it is not treated as an inequality. So to make them equal or to protect them, state can make a special law which is purely favor of women and children due to certain body or a physics or a biology. So हम लोग क्या करते हैं, हमने बहुत सारे कानून बना दिए हैं। एक कानून के हिसाब से बात करें तो हमारे यहाँ इतने कानून है कि ऐसे बोला जा सकता है कि यदि Almighty want to take birth on this planet, then they select the India, because each and everything is narrated in law books. Everything is very clarified in law books. Before the birth, law is there. After the death, law is there. During the life, law is there. But whether the law can serve the need of the society for what the law is or are enacted, this is the $1 million question. हमारे यहाँ प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन एक्ट के ऊपर प्रतिबंध है। तो बच्चा पैदा होने से पहले भी जो गर्भ होता है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो हैव अ राइट। अर्लियर ओनली द पर्सन हैव अ राइट, नाउ द सुप्रीम कोर्ट से एम्ब्रियो इज अ पर्सन एंड यू कैन नॉट टर्मिनेट इट। सो द बिफोर बर्थ द एम्ब्रियो हैव अ राइट, एंड आफ्टर द डेथ हाउ द डिसीज प्रॉपर्टी कैन बी मैनेज, देयर इज आल्सो अ लॉ। लेकिन जो महिला या कोई भी आदमी बच्चा जिंदा है, उनको ये अधिकार मिलता है, जितना जन्म से पहले मिलता है उतना उसके जीवन काल में मिलता है। नहीं मिलता है तो हमारे समाज के लिए ये एक बड़ा डरावना दृश्य हमारे सामने खड़ा करता है।
क्योंकि जो महिला है उसको हम पूजा में, मंदिरों में, देवघरों में, किताबों में, धर्म ग्रंथों में अलग से डिपिक्ट किया है, लेकिन व्हाट इज द रियलिटी? Law in books and law in practice. We can say in law, de facto and de jure is are same, or is there any difference? Then we can't say in positive science, law is there, but how the one can enjoy the right or legal protection can be available. In this context, after the completion of the Second World War, United Nations was organized and one committee was formed to draft a commission on Universal Declaration of Human Rights. And fortunately from India and Gujarat, Dr. Hansaben Mehta was the one of the member of the committee, and later on she also our Constitutional Assembly committee member. So what is discussed in the UN HRDC, UNCRC is also discussed here in the Constitutional Assembly. So many provisions are converted in our constitutional provision. So automatically we can be benefited. हमने बहुत तरक्की की है. विडो पहले जो मैरिज नहीं किया करते थे उसके लिए हमने विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में बनाया. सती के प्रति हमने कानून बना दिया. ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती उसका भी कानून बना दिया. लेकिन जो महिलाएं जिंदा रहती है वो सही में अपना जीवन अपनी लिबर्टी के साथ एंजॉय कर सकती है कि नहीं कर सकती है. ये हमारे लिए एक बड़ा सोचने का सब्जेक्ट है. वो हिसाब से देखा जाए तो कन्वेंशन ऑफ पॉलिटिकल राइट ऑफ वीमेन 1954 में फ्रांस के अंदर तो जबरदस्त क्रांति हुई. उसमें मैन के लिए राइट था, लेकिन वहां पे महिलाओं ने जागृति लाई और बोला कि इट्स राइट फॉर वीमेन ऑल्सो. At that time, women cannot took part in the politics. If women found guilty, then more punishment was there. And the women of this France gave a very tough fight and finally succeeded and get the highest right which is available in the France to the women, because she sacrificed a lot, she suffered a lot, and later on people recognize the suffering and the, we can say, devotion, and finally women got the right. Later on, Convention of Elimination of All Form of Discriminations Against Women took place in 1981. Then after all the signatory of this document, the country make a law, and in this context, we also make many law and amended our existing law in favor of women, because it is a duty of the signatory country to make law in harmonious provisions of the, in short form we can say, CEDAW. Later on, World Congress on Human Rights took place at the Vienna in 1993. At that time, girl, child, and other rights are protected, are emphasized. Women empowerment movement also took place in India as well as the international level. There was a decade was celebrated for empowerment of women. What is the empowerment and how the empowerment can be worked? महिला सशक्त कैसे हो सकती है? Then it's required two things. Social empowerment is needed, and social empowerment cannot solve the purpose unless there is an economic empowerment. And economic empowerment and social empowerment, education is the base of both the empowerment, and education is the base contraceptive, we can say in our law also. So if the one is educated, so many negative things cannot come to the person who is educated. I am not talking about the literate. मैं पढ़ा लिखा की बात नहीं करता हूँ, मैं अक्षर ज्ञान वाले की बात नहीं करता हूँ. मैं जो ज्ञाता है, एजुकेशन, जिसको हम गुजराती में केलवणी बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं. लिटरेसी एंड एजुकेशन इज डिफरेंट. पंडित रविशंकर रावल, the Gandhian follower and the contemporary of the Gandhi, was very rightly distinguished difference between education and literacy. He said that literacy have three concerns: read, write, and calculate. पढ़ना, लिखना और गिनना. Whereas education have three concerns: heart, mind, and limb.
जो दिमाग से सोचेगा, हृदय से अपनी फीलिंग व्यक्त करेगा और अपना काम करेगा। सो लिम्ब, हाथ और पांव जो हमारा लिम्ब है, ऑर्गन है, उससे काम करेगा। लिटरेसी क्या करेगी, मुझे कितना फायदा हो रहा है, मुझे कितना घाटा हो रहा है, वही बात करेगा। एजुकेटेड मैंने, और फोरफादर वाज इलिटरेट बट हाईली एजुकेटेड। वो क्या बोलते थे, जो हमारा हक का है वही हमें लेना है, ना हक की कोई भी चीज हमें लेनी नहीं है। आजकल देखे तो बहुत सारे हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर, एडवोकेट, जजेस, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स आर फाउंड गिल्टी फॉर lowliness एंड करप्शन। क्यों ऐसा हो रहा? So we can say they are not educated, they are the only the literate people. And if we interpret the definition, we can definitely say they are literate people, not the educated people. Because educated people never make a damage to anyone. So, in that context, in our constitution, in 73 and 74 amendment took place, where grassroots level, the Panchayati Raj, it may be a Gram Panchayat, Nagar Panchayat, or municipal corporation. We have 3-tier Panchayat system. So, in part 9 of the constitution is amended, and there is a compulsory reservation for women. So, it's come upward from grassroots level. See the ideology, whether it work or not. हमने कई बार सुना है, कई लोग बोलते हैं एसपी सरपंच का पति एसपी है। आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट सेंस। तो ग्रासरूट पे जो जागरूकता आएगी तो धीरे धीरे परकोलेट होते होते ऊपर आएगी, तो ऐसे एक सारा अच्छा लीडर हमें मिलेगा। कई सारी किताबें भी है कि जहां महिलाएं सरपंच है, महिलाएं नगर पालिका की चलाती है, महिलाएं मुखिया है, बहुत सारी बातें आती है, किताबों में आती है। लेकिन ultimately what we got, whether only political we achieve and fulfill the requirement of the constitution, or it can cater the need of the ideology accordingly. उसके लिए जो हमारी विभावना थी वो विभावना काम कर रही है, या तो एक जो राजकीय उद्देश्य है वो एक प्राप्त होता है और टेन्योर के बाद में खत्म होता है। हमें ये हिसाब से देखना है कि महिला रिजर्वेशन नहीं है या महिला रिजर्वेशन का टेन्योर खत्म हो गया, फिर महिलाएं कोई मेयर बनती है, फिर महिलाएं कोई सरपंच बनती है, फिर महिलाएं कोई नगरपति बनती है। हमें ये देखना है। एंड इफ इट कुड बी हैपन, then this is a real empowerment of the women, not on the mercy ground, but through the ability, capability and acceptability by the society. तो ये सारी बातें हैं वो हमें अवगत कराती है, जागरूक कराती है, हमें बार बार टकोर करती है। इट टच अवर हार्ट व्हाट वी आर डूइंग। हम बोलते हैं, पाठ भी आता है संस्कृत में कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ जो देवता है वो भी यहाँ खेलने के लिए आना पसंद करता है। वही हमारा भारत है। आपको हर रोज का कोई भी न्यूज़पेपर ऐसे नहीं देखेंगे जहाँ महिला ने आत्महत्या न की हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ न की गई हो, और महिला ने का कहीं ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट न हुआ। सेक्सुअल हैरेसमेंट के कानून हमने 2013 में बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ द वर्किंग वुमेन, सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रोटेक्शन प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट। हम 1950 में हमारा संविधान लागू करते हैं, हमारा लोक राज्य आता है, प्रजासत्ताक बनता है, और हम कितने पीछे गए कि हमने 2013 में एक कानून बनाया कि जो महिलाएं काम कर, अब महिला ऑफिस में काम करती है तो ऑफिस में काम करने वाले लोग पढ़े लिखे तो होंगे, उसको तो उसका दायित्व क्या है, उसका अधिकार क्या है, दूसरों का दायित्व क्या है, क्या उसको पता नहीं है? क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है और बार बार एक गुनाह बढ़ता है, और 2013 में हमें कानून बनाना पड़ता है। हमने कितना प्रोग्रेस किया। हम लॉ में बोलते हैं कि जब हम आजाद हुए तब हमारे पास कितनी स्कूलें थी, हमारे पास कितनी कॉलेजें थी, हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटी थी, हमारे पास कितने रेडियो स्टेशन थे, और हमारे पास और कहीं कितनी सारी व्यवस्थाएं थी।
कितने पुलिस स्टेशन थे, कितनी जेलें थी। आजादी के बाद में हमने बहुत तरक्की की, बहुत सारी शाला खोल दी, विश्व महाविद्यालय खोल दिए गए, महिलाओं के लिए स्पेशल भी महाविश्वविद्यालय खोला गया, सब्जेक्ट में भी स्पेशलाइजेशन हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, हर सब्जेक्ट में सोशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, सोशियोलॉजी ऑफ हाइजीन, सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट, लॉ में भी स्पेशलाइजेशन हो गया, मेडिकल में भी स्पेशलाइजेशन, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ब्रांचें हर सब्जेक्ट में आ गई, बराबर। यूनिवर्सिटी अभी स्पेशलाइज हो गई, बहुत सारे धर्म के देवस्थानों, प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑल्सो इंक्रीज, पुलिस स्टेशन भी बढ़े, जेलें भी बढ़ी, गुने भी बढ़े। यदि शिक्षा बढ़ती है, धर्मस्थान बढ़ते हैं, तो एक गुनाह क्यों बढ़ता है? मेरा आप सब सज्जनों से मेरा नम्र निवेदन है, उसमें थोड़ा झांकिए कि हमने कहां गलती की। जब हमने बच्चे को क्वेश्चन आंसर ही पढ़ाया, या हमारे टीचरों ने हमने वही पढ़ाया, या हम टीचरों के वही पढ़ाते हैं, या उसके हृदय के पास कभी जाके छूना है, उसकी वेदनाओं को कभी हमने, वो गुजराती में बोलते हैं ढंढोड़ा है, एंड वी सेंसिटाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टूडेंट और सोसाइटी। जब ये एजुकेशन बढ़ता है तो क्राइम क्यों बढ़ता है? अरे सारे धर्मों के धर्मगुरुओं भी महिलाओं के प्रति अपराध करते हैं, जिसको हम पूजनीय करते हैं, वंदन करते हैं। आज मुझे आप कोई भी एक ऐसा जगह बता दो जहां महिलाओं के प्रति अपराध न हुआ हो। मैं इतना सोशियोलॉजी का अभ्यासी नहीं हूं जितना आप लोग हैं, क्योंकि आप तो सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, मैं समझता हूं। आपने कहीं कोई ऐसी जगह मतलब कोई ऐसी इंस्टीट्यूट, स्कूल, जेल में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपने चार घर में भी सुरक्षित नहीं है। वो बात छोड़िए, अपने पिताजी के घर भी महिला सुरक्षित नहीं है। उसका भाई, उसका चाचा, उसका मामा, अरे उसका पिताजी भी उसके साथ जातीय व्यवहार जबरदस्ती से बांधता है। इंसेस्ट बोलते हैं हम इंग्लिश में। क्या हमारी सेंसिटिविटी इतनी ब्लंट हो गई? क्या हम इतने हाई फाई हो गए? आज से 15 साल पहले इंसेस्ट वाज ए फॉरेन वर्ड, इंसेंस, INCEST, incest. Now every week you found चाचा ने भतीजी के साथ, मामा ने भाजी के साथ, पिताजी ने पुत्री के साथ, पुत्र ने माताजी के साथ। ये सब क्या हो रहा है? हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? क्या हमारी धरा, हमारी संस्कृति यह है? हम क्यों अपने मेन ऑब्जेक्ट से डेविएट हो रहे हैं? क्या हम कुछ बना और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं? धर्म स्थानों में महिलाओं की सलामती सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो वहां ही इनसिक्योर है। क्यों है? एक पिता अपनी 3 साल की बच्ची के साथ हर रोज पेपर में आता है, हर पेपर में आता है, आई हैव ए लॉट ऑफ क्लिपिंग। हम क्या करते हैं? उसके लिए अलग कानून बनाया, उसके लिए अलग कोर्ट बनाई, लेकिन जिस घर में वो पैदा हुई है, जन्म लिया है, वहां ही उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है। उसको कौन बचाएगा? मेरा ये एक सोशियोलॉजिकल सवाल, मैं कानून की बात नहीं करता हूं। हमें तो पढ़ा हूं कि जब समाज फेल होता है, when the society fail, law emerge. Law is a instrument of social change, but law cannot function in a vacuum. शून्यावकाश में कानून काम नहीं करता। They want helping hand, living hand. क्या हमारे पास ऐसा है? पुलिस स्टेशन में भी महिलाओं पर अत्याचार होता है, पुलिस भी अत्याचार करते, सब लोग करते, टीचर भी करते, ये भी।
सर कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट बताइए क्यों होता है। अभी मैं बात करता हूं सामाजिक जागृति की, ये मैंने सोशियोलॉजी की बात की। अभी देखो हमारा समाज कैसा होगा। कोई आपने कभी ये सोचा कि हम मान लीजिए कि हम कम से कम 25 साल के तो होंगे ही, यंग लोग, बहुत सारे लोग 30 के भी होंगे, 40 के होंगे, 45 के भी होंगे, 55 के भी होंगे। यदि हमारा बच्चा या हमारा यंगर ब्रदर या हमारा भतीजा या भांजी न्यूज़पेपर पढ़ेगा, इट मे बी इन लोकल लैंग्वेज वेयर यू आर रिसाइडिंग, उसमें लिखा होगा, आई से फर्स्ट इन गुजराती, पिताए દીકરીનું શિયળ લૂંટ્યું. He said in Gujarati, શિયળ means this, he sent it. पिता ने बच्ची के साथ जातीय शोषण किया, इसे हिंदी में भी कहा, और फादर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट द हर डॉटर, हिज डॉटर। वो बच्चा अपने गार्डियन को पूछेगा कि उसका मीनिंग समझाइए। 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला बच्चा या सेकंड स्टैंडर्ड वाला बच्चा आपको पूछेगा। एज ए सोशियोलॉजी स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, how you can explain, and I hope before explaining you got shocked how one can be explained as a sociology. And nowadays sociological counselor are more needed. Then we have to go to the counselor, how I can convince my dependent, my relative, my son, my daughter, my nephew, my niece. आपने कभी ये सोचा है, अरे हमारा बच्चा भी सलामत नहीं है क्योंकि बाजू वाला के घर चला गया और उसको पेपर में आता है टीवी देखने गए, ऐसा हो गया, चॉकलेट की लालच दी, ऐसा हो गया, ये क्यों होता है। और आपको अभी ये मैंने बात किया, हमारे संविधान में इक्वालिटी की बात की गई है, आर्टिकल 21 में नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी अनलेस द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 बोलता है। हर साल हम लोग अंतरराष्ट्रीय महिला दिन 8 मार्च को मनाते हैं। ये जो वोटिंग राइट जो है हमारे यहाँ तो पहले से मिला हुआ है, सीडो के हिसाब में हम सिग्नेटरी हुए हैं, तो हमने अपने कानून में संशोधन भी किया है और नए कानून भी बनाए हैं। एक कानून की बात यह है, हमने घर डोमेस्टिक वायलेंस, पति अपनी पत्नी को मारता है, उससे पहले शादी नहीं होती है तो क्या क्या गुल खिलाते हैं, शादी होने के बाद में क्या होता है। ससुर जी भी बोलता है तो हमारी बेटी है, आप चिंता मत कीजिए, ननद भी बोलती है तो मेरी छोटी बहन है या बड़ी बहन है, लेकिन घर आने के बाद में 1-2 साल में क्या हो जाता है कि वही उसको मारते हैं, कंपेल करते हैं फॉर सुसाइड, और बोलता है कि इतना पैसा लाओ, ये करो, ये क्यों ऐसा हो जाता है। The same person, same family, same relation are changed 360 degree. Why? What is the need of it? Why? हमारा काम समाज को, सेंसिटिविटी को बुलंद रखना है, जीवंत रखना है। क्वेश्चन आंसर तो बच्चे पढ़ लेंगे, आजकल ऑन फिंगर टिप they got the question and answer. Google Baba is there, but Google Baba cannot sensitize anyone, and it's require human approach with full of humanism, zeal and jealousy. Then and then we got the same respect which our forefather have a respect as a good teacher, not as a good family member, as a good teacher. तो ये सारी बातें हैं, ये मैंने सोशियो लीगल एंगल से कही। नाउ वी विल स्विच ओवर टुवर्ड द व्हाट इज द रियलिटी इन लॉ, क्योंकि टॉपिक का कारण है कानून, महिलाओं के प्रति अपराध, सोशियो लीगल एनालिसिस। बहुत सारे लोग ऐसे भी आप में से होंगे कि जिन्होंने लॉ किया होगा या लॉ पढ़ा होगा करिकुलम में या ऐसे या पेपर के हिसाब से।
तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, उसका एक डिपार्टमेंट काम करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इज कॉल्ड शॉर्ट इन एनसीआरबी। वो 1950 से लेके 2020 तक कोई बड़े शहर में, हर राज्य में, हर कानून के तहत कौन सा गुनाह हुआ, कितने आयु वाले ने किया, कितने नंबर हुए, कौन सी सेक्शन पे किया, कितनी आमदनी थी, क्या पढ़ा लिखा था, उसका सारा एनालिसिस करता है। आई होप you have an idea as a student of sociology, because sociology and the law is a close relatives, not a distant relative but a close relative. तो 1950 से पब्लिश होता है, 1970, 71, 72 तक, पहले तो ये हार्ड कॉपी में होता था, तो 5-6 साल के बाद पब्लिश होता था. Now for last 4 or 5 years, now it is available on digital form. So after completion of the 1 year, suppose now the 2020 data is already available. So up to 1972-73, the rape, now his name is changed to sexual assault, was not got a place in crime in India. महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें, जिसको हम सामान्य लैंग्वेज में बलात्कार कहते हैं, उस कानून, ये अपराध को उसमें स्थान नहीं मिला था, क्योंकि इट वॉज वेरी नेग्लिजिबल इन नंबर्स. नेग्लिजिबल इन द सेंस ऑफ, उसमें जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कैटरपिलर है, कैटरपिलर जो अब सारे सब लोग समझते हैं, गुजराती में संगीता बहन बताओ तो कान खजूरा बोलते हैं उसको हम लोग. उसके 1-2 पांव टूट जाते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है चलने में, निग्लिजिबल है. जैसे हमारे पास 1 लाख रुपया है, उसमें से 2-3 रुपये गिर गए तो हम लेते नहीं है, लेकिन लालच में गए तो मर जाते हैं. तो इट वॉज निग्लिजिबल इन नंबर, सो इट नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द कॉग्निजेंस, इंग्लिश में बोले तो. लेकिन 73 के बाद में इतनी बढ़ोतरी हुई, दिन दिना और रात चौगुनी. महंगाई का नंबर से भी वो मार गया, महंगाई को भी पीछे रख दिया उन्होंने. और महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो सारे ऑलवेज गोइंग अहेड. हमारे पास नंबर है, मैं आपको ये नंबर है वो भिजवाऊंगा. 2012 से 20 तक का मैंने डेटा लिया है जो पब्लिश हुआ है, और आपको जान के ताज्जुब होगा. कई लोग आगे रिफ्रेशर कोर्स में आए होंगे या ओरिएंटेड तो सुना भी होगा, वो उसके लिए दोबारा होगा. मैं 3-4 साल पहले छत्तीसगढ़ में गया था, रायपुर में लेक्चर लेने. तो मैंने एक लेक्चर लिया कि गैरों से नहीं अपनों से सावधान, पेपर में आया. 2-3 पत्रकार आ गए, हे आप गुजरात से आए और हमें ऐसा भड़का रहे हो, क्या है बात, क्या है? मतलब क्या हुआ, आपने बताया अपनों से सावधान, गैरों से नहीं, उसका मतलब क्या होता है? मैं कुछ बोला नहीं. मैंने मेरा तभी तो मैं लैपटॉप लेके जाता था, लैपटॉप खोला, उसमें से एनसीआरबी की साइट खोली, क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन दिखाया, उसमें प्रॉक्सिमिटी करके सब हेडिंग होता है, सब टाइटल होता है, उसमें गया तो उसमें क्राइम कमिटेड अगेंस्ट वीमेन बाय फैमिली मेंबर्स, ब्लड रिलेटिव्स, क्लोजर रिलेटिव्स, नेबर्स, ऑफिस बेरर्स एंड अदर नोन पर्सन एंड टोटली अननोन पर्सन. तो जो अननोन पर्सन था उसका प्रतिशत 8% था, यानी कि 100 में से महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए हैं, जातीय अपराध हुए हैं, उसमें से 94 अपराधी महिलाओं को अच्छी तरह से जानते थे.
ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं कि यहाँ नौकरी कर, नहीं, दे हैव ए गुड रिलेशन. So only 8% or 6% are unknown, which was happened in the old time also. So we can say it's a real crime where the women put in a awkward position or a situation and she victimized. Then other is the planned by the known person. जैसे मैं कई बार बताता हूं, आप तो सब बड़े हैं, डोंट मिसअंडरस्टूड मी. जैसे मैं मान लीजिए मैं कहीं घूमने गया, मैं अहमदाबाद में रहता हूं, तो अहमदाबाद में की घूमने की जगह आप मान लीजिए कि एक लॉ गार्डन है जहां लॉ कॉलेज होया करती है. तो मैं वहां जाऊंगा तो मैं कोई अननोन लड़की का हाथ पकड़ूंगा? कोई भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि पीछे उसका भाई, उसका चाचा, उसका मामा आ रहा होगा. सही बात है ना चौधरी जी, केसर चौधरी जी, मेरी बात सही है ना? यस सर, यस सर. यस सर. मैं जी सर. लेकिन मुझे पता है कि एक्स नाम की लड़की है, उसको मैं पहचानता हूँ और उसके रिश्तेदार को भी पहचानता हूँ, वो कोई अगल बगल में नहीं है, तो मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा. समझे? तो क्या होगा कि जो जानता है वो सब तरह से जानता है. ये बात मैं नहीं बताता हूं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है. और अभी ये बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों में देखा जाए तो 8 सालों में, जरा गौर से सुनिएगा, 2012 से लेके मैं बताता हूं, 12, 13, 14, 12 में जो महिलाओं के प्रति रेप हुआ था उसमें 99% are committed by known person. 2013 में 94.36% committed by known person. See the figure. In 14, 86. Fortunately, it is reduced. Percentage is reduced. Number is increased because the population is increased. The number may be increased. Gradually, it's go to 95.52, 94.63, 93.05, 93, 2019, 94.17, and 2020, 95.60 are by known person. If we look into number, what is the number? In 2012, मैं पहला और दो लास्ट का ही बताता हूं. 2012 में 24519 मतलब 24,519 जो महिलाओं के प्रति रेप का आरोप अपराध हुआ था, उसमें से अननोन जो एक्यूज था वो 49 थे. यानी कि 24,470 लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे. और 2020 में 28,046 28046 क्राइम हुए. उसमें से 1238 मतलब 1,238 लोग अननोन थे. यानी कि 26,808 अपराधी और शोषित एक दूसरे को जानते थे. हमने कितनी सामाजिक तरक्की की. देखो, शिक्षा बढ़ती है, मैंने पहले आगे किया भी ना, उस हाइपरलिंक. शिक्षा बढ़ती है, धर्म स्थान बढ़ता है, तो गुनाह क्यों बढ़ता है? वही गुनाह होता है. They should give solace, safe and happiness to our soul, but they are exploiting our body. How they can provide a solace and peace? It is meant for that. What do you mean by place of worshipping or a worship place of worship?
he got peace, calm. Highest level of degree of peace can be available at the spiritual place, which is now we say we go for a religious place, for our spiritual upliftment, where one can victimize, where one can go. This is the topic should be discussed in the classroom, should be understood and discussed in every family. Then we can stop crimes against women. Because every woman is unsafe. Take it from me. Because today my wife go out, then I'm also always scared. If she late, I'm worried what happened. It doesn't mean that she is wife of a professor or a doctor or an IPS officer. In Delhi, 10 or 15 years ago, one ambassador of one country was raped in a cinema hall. Maybe the staff, highest position, IA or the high level staff of the embassy, women are raped. Now, what is the security and safety? Where a common man can go? They have no any shelter. Who protect? Now, so where we miss, where we commit a mistake and take it, we are going to a Vishwaguru. Vishwaguru in the context of knowledge, in the context of power, or only in letters. हमें ये बात सोचनी है whether we fail to discharge our duty toward the society. It's very important things, because a sensitized man sensitize others man. Artificial intelligence cannot sensitize. Now everybody is talking about the AI. AI means not in Gujarati AI. Capital A and I. Artificial intelligence. Artificial intelligence cannot sensitize the sensitivity of a human being. They can glorify it, they can depict, they can exhibit, they can provide the materials, but not touch to the heart of the man unless one heart is vibrating. And it's cast duty on the teaching community to keep the heart of a man in a vibration. So, where we commit a mistake, if our university is increased, our education ratio is increased. I'm not talking about number. Education ratio is increased. Can anyone think it? हमारे यूनिवर्सिटियों ने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ और एंटी रैगिंग के खिलाफ 2 गाइडलाइन जारी की है, और हर यूनिवर्सिटी में और हर कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी भी बनाई गई है और WDC भी बनाई गई है ना? Fortunately, I was the earlier member of the ICC Internal Complaint Cell and the WDC. अरे यूनिवर्सिटी में ये क्यों? महाविश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय, जहां तो कोई किसी की छेड़छाड़ी होने का सवाल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो वही होता है। अब देखिए हर यूनिवर्सिटी में देयर इज ए कंप्लेंट। व्हाई? वेयर वी मिस्ड? Someone can say it was not taught by secondary education, it was not by higher secondary teacher, it was not taught by primary teacher. I say it not taught by family itself. Every family member are busy to meet the two ends, because this is the time where one have no time to spare with the family members.
but we have a full time to discuss political debate, sports debate, and some other debates, and where we can't do anything or we can't contribute anything. It is better to discuss with our family and our neighbor and our group in context with the sensitivity and socialization in true science. Then time will came that everyone feel happy and safe. Another thing, when this Nirbhaya case took place in Delhi, then I'm also invited by the High Authority of the Police in Ahmedabad to train PI and PSI, and later on the mediocre, the lower level of the police, those who are really working with the crime and crime scene. I say only two things to this police constable: go to the school and college and mohalla. Say, don't put blind faith to anyone, because nowadays, if someone want to cheat someone, they are not sketching the chain or a pouch. They first got your confidence. You are taken in a confidence and awaiting for a chance to rob you. अभी ये जो नए नए लोग होते हैं वो ऐसे कर देते हैं. अभी ऐसा होता है, पेपर में आता है ना, एक फ्रेंड 10 साल से फ्रेंड थे, उसने ऐसा किया, क्लास में बच्चा पढ़ता था और इसने ऐसे. क्यों? फर्स्ट दे एक्वायर द कॉन्फिडेंस, they win the confidence and awaiting for opportunity. So I'm saying that the person is not honest, but it is a deprived from chance. मेरी बात समझ रहे हो? वो प्रमाणिक नहीं है, वो तकवंचित है, इसीलिए हमें प्रमाणिक लगता है. जब भी उसको मौका मिलेगा, because now you got and you believe that he or she is a good friend of mine and nothing happened to me. But other side, there is a calculation. Everything is calculated. When one found a time and pick up the moment and never allow you to run away from the clutches of the person. So don't put any blind trust to known or unknown person. Reason is, now it's a new trend. Don't make hurriedly crime. Someone surrender you. You compel them to be surrender, or people will not believe. Now this is the psychology developed by those who have a criminal trait in the mind, or they follow some intellectual level. And this is the thing, and don't believe anyone where there is a safety issue is there. So in cybercrime also, sometimes we found free download, screensaver and other app and this. Then always think it is a free, but how far it is safe. So compare everything, free versus safe, friendship versus safety, good versus safety. So in so many religion books, the authors say, even though father should not live with his daughter alone in the same room, religion books say, because it may happen. It's warned by so many religious people. And other is a calculated man. He is very, and we say, oh, we study in a English medium, high-fi school, and this and this. And we are free mind. You are free mind, but whether you are safe or not. How you are safe? Safety first. If we look in this matter, then we can prevent
protect the victim, the person, and punish the criminals. But, and this is in our hand. Why we are worried about the criminals? Let be competent. We should not be come in a clutches of the mischievous monger. We should not tempted by some petty gifts, chocolate and shoes and mobile and other, as per the capacity of the person who want to convince you by showing the richness. But whether the richness of other in true sense or it just is throwing some things and trap is there. One want to trap you. वो जाल बिछाता है, जैसे कहानी आती है ना, बोले जाल बिछा के दाना डालता है, जैसे आप दाना खाने जाएंगे जाल में फंस जाएंगे। तो ये कानून के हिसाब से हम देखें, वो मैंने बताया कि कानून का सिनेरियो ये बोलता है, and if we can found the guilty, then what is the rate of conviction? Is not more than 20%. It is moving between 15 to 20%, and others are scot free due to the prosecution is failed to prove beyond the reasonable doubt, and accused was acquitted, is acquitted. Why people are not ready to give the evidence against the accused in favor of victim? Why? Because we are worried, we are segregated, or we are in isolation, or we are not thinking about the as a whole, and mischievous mongers are taking the benefits. And if we unite systematically, first we protect ourselves, that I should not be trapped, I should not be lured by anything. Friendship is good, okay, and if friendship, let's sit in the open. Don't go in a evening time in a dark corner. Why? So sunlight is a base disinfectant. हम भी देखे सब्जी लेने गए और प्यार हो गया, तो ऐसे तो किसी को नहीं होता है। सब्जी में प्यार बिकता है क्या? दूध लेने गए और हो गया, कोई इसके साथ भाग गई, इसके साथ भाग गई, 1 साल के बाद देखे तो घर पे वापिस आ गई। क्यों? और प्यार था तो प्यार तो निभाना पड़ता है भाई, ये तो जन्मों जन्म का साथ है। भी बोलते तो लास्ट जन्म था, जल्दी खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। We don't. What is love? I don't want to. I'm not a love guru, but love is with Rama and Sita, Rama and Lakshmana. Love requires sacrification. Rama was given the exile, 14 साल वन में जाइए. Why the Lakshmana ready? He have a love for his brother. Then what about the wife of Lakshmana? She have a love and say, now you go and take care of your brother. I will be here. I sacrifice your company for your love to your brother. She sacrifice. This is love. Love requires sacrification, not the exploitation. आजकल तो क्या होता है, 5 साल से मेरे साथ कोई गर्लफ्रेंड है, ये तो मैं बताता हूँ, ऐसा कोई हुआ भी नहीं है और होना भी नहीं है। तो मैं कितनी गिरता हूँ कि कॉलेज में थे तब मैंने उसको एक गिफ्ट दिया, एक गिफ्ट दिया, एक गिफ्ट दिया, फोन दिया। फिर जब शादी की बात आई तो वो बोलती है हमारे पिता, हमारे घर वाले बोलते हैं अपनी कम्युनिटी में शादी करेंगे, अपने जात वालों से शादी करेंगे, बाहर वाले से नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, साला मैंने कॉलेज से आज तक 5-10 साल जो भी जिसका भी वो गिन लेना, 50,000 रुपये उसके पास खर्च किया और अभी ना बोलती है। क्या करता हूं मैं, एक्सीडेंट कर देता हूं, एसिड मारता हूं, एसिड थ्रोइंग केस बनता है, मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। अरे आज तेरा 6 साल तक प्यार रहा तो लीव इट। जहां मैं प्यार से तेरे को बोलता हूं आप जिससे शादी करनी हो करे, आई विल सफर होल लाइफ। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, यूं ही होता है, मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। और हमने कानून बनाया कॉम्पनसेशन फॉर विक्टिम ऑफ एसिड बर्निंग विमेन।
साला देखो तो सही क्या हमारा समाज है। महिलाओं को कहीं ने एसिड छोड़ा और मार दिया, रेप कर दिया, हम उसको पैसे देके जीवंत रखना चाहते हैं। अच्छी बात है, जीना चाहिए, मैं नहीं बोलता कि उसको मार दीजिए, लेकिन with which sanctity, which dignity she can live alive. I want a life with dignity, dignified life, not the compensatory life. Let the punishment should be available to this as early as possible. There is also some example. In a 1 month, the accused was given a punishment when found guilty. So many cases are there, but it is a twinkling, and twinkle cannot provide a daylight or a moonlight. It is just twinkling. It can't throw the light. It can't create a awareness. It can't remove the darkness which is in the mind of the man, and the darkness in the mind of. And today I deliver a lecture at one international conference on Asian Criminological Society. Crime is a behavior. First it took place in the mind. Then our body will apply. So if we provide a good mind, and circumstances make the man criminal. Criminal are not born. Circumstances. Earlier, before 73, why the rape was not took place? And after it is increased all the numbers, that means we fail to give the good sacrament in our family members, in our societal members, in our teaching institution, in our religious institution, in our whole institution, we fail to. And we also say it just for sake of entertainment. And give the name, my boyfriend, my girlfriend, without knowing the end. Looking to the present, some tidbits, some gift, some other, and the poor coming from the ruler side, coming from poor family, are interested to show the richness, or I can also wear a good dresses and have a good, are victimized, and they will came, the real they will produce. The day DAY, day WI will came, and they will DEVIL come, appear before the man, before the women. So the thing is, so many courts, special courts are there, legislations are there, special trained public prosecutors are there, special police are there. But even though crimes against women have a highest, not in number, percentage is increasing. Keep in mind, percentage is increasing, the ratio is increasing, and it is very disastrous for future generation. So what we want? Which type of society we want? Good society? Then end in crime against women, and look into the girl child, the horrible scenario. Why? See, so many factors are responsible. Why the criminal are flooding in the society? Our GDP is increasing, same way the criminal are increasing. Our place of worshipping is in temple. There is also a सभ्यता से बैठना. अरे मंदिर में भी सभ्यता रखनी होती है, वो लिखा हुआ होता है. Sit like a civilized man. Pickpocketer may be there. So how we can make a change in the society? And we want to start change and lighting the lamp of our cotton lamp, not the tube light. Tube light keep with another tube light and spark took place. But our indigenous lamp, he enlightened the other lamp.
जो दिया जलाते हैं ना हम, एक दिए से दूसरा दिया जलता है, ट्यूबलाइट से दूसरी ट्यूबलाइट नहीं जलती है। एंड महात्मा गांधी टोल्ड वेरी राइटली, where the inner burns illuminate the whole world। जब हमारा अंतरात्मा को जलन होगी तब बाहरी दुनिया को प्रकाश मिलेगा। गांधी जी was not thrown out from the railway, then we could not become independent, or we could not have a freedom in 1948, because he whole night he was not slept, slept SLEPT, पूरा रात सोया नहीं। वो दूसरे दिन इंडिया आ सकता था, फिर भी वो गए टांगे में, और टांगे वाले ने भी उसके साथ मिसबिहेव किया। He can also get down and come back to India, but he have a zeal. How long human can face the discrimination on the ground of color is called racism. And racism is an anthropological idea, not the sociological, anthropological. We can say Mongolian type, Indian type. If we go in a south, northeast hilly area, there is a different type of species, Mongolian type. This is a genes which are responsible for that. Why Gandhi start struggle in South Africa and stay more than 1 year, even though he decided to get back? So no, this is a discrimination on the ground of color. Here, the discrimination against women on the ground of sex. And keep in mind, gender discrimination is different and sexual discrimination is different. Sex is a nature of the body. Sex is a nature, I mean masculine or a female. पुरुष और महिला जो उसके जो बॉडी के पार्ट है, उसी को हम जाति बोलते हैं। हम सेक्स को वर्ब में यूज करते हैं, लेकिन रियल में सेक्स माने व्हाट इज योर सेक्स अने योर सेक्सुअलिटी, यू आर ए मस्कुलिन और ए फीमेल, और नाउ द न्यूट्रल जेंडर इज आल्सो देयर। तो मैं पुरुष हूं, उसमें मेरा कोई प्रधान नहीं है। इट इज डिटरमाइंड बाय ऑलमाइटी। So it is a biological difference created by Almighty, right? चौधरी जी बराबर है मेरी बात? सोमा चौधरी जी, मैं यूं देखता हूं कि सब लोग सुन रहे हैं या मोबाइल नीचे रख के। राइट सर, राइट सर, राइट सर। सुन रहे सर। अरे सुन रहे हैं सर। हाँ सर, यस सर। तो ये सुन रहे हैं सर। यस सर, प्लीज गो अहेड। यस सर। ओके। यस सर। थिंग इज, सुन रहे हैं सर, थिंग इज कि हाँ मैं पुरुष हूं या कोई स्त्री है, उसमें उसका खुद का कोई रोल नहीं है। There is no contribution of me to be me, a male member of the society. Almighty decide. Almighty decide. The embryo may be male, female, or a neutral gender, right? But on the ground of the sex, keep in mind, बराबर सुनना भैया, सब भाई और बहनों, on the ground of sex, we create discrimination. Is called gender discrimination. महिला और पुरुष तो अलग है ही, उसके हिसाब से महिलाओं को कहीं जगह जाने से रोकना, महिलाओं को कुछ अधिकार नहीं देना, ये जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। उसके लिए भी बहुत सारे केसेस हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में,
उसकी भी थोड़ी बातें यहाँ करूंगा, क्योंकि आई वॉन्ट टू कन्विंस यू द व्हाट इज जेंडर। ये जो कई जगह ऐसा भी हुआ है हमारे हिंदुस्तान में आजादी के बाद में कि कई जगह पे महिलाओं को नौकरी रखते थे। उसका एक एयर इंडिया का केस हुआ कि एयर हॉस्टेस, when you are appointed as a air hostess, then up to certain age you should not marry, and if you marry, then up to certain age you should not conceive, and if you found, then your service may be terminated. Then one case go to the Supreme Court, and Supreme Court say it is a right of a female, it is a natural right of a female to be a mother. His case name is Nargis Mirza versus Air India. You can't deprive of anyone from his natural rights, and she have a right to conceive and be a mother. Then the argument was there in air hostess, it requires a particular tribe of structure or another. Then the court say, then you appoint a lady who conceive and deliver a baby, because there is a certain age for a productivity, for a reproduction, not any can say productivity, but the reproduction up to certain age is required. Otherwise, it create a lot of problem. I hope you are understanding my point of view. अमुक एज के बाद में यदि महिला जो गर्भवती बनती है तो वो उनके हेल्थ के लिए या आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट या जानकारियां या दवाइयां लेनी पड़ती है। तो सर्टेन एज इज अ प्राइम एज, and when she deprived, then what will be happen to the society? Then you appoint the person in a field of job, आप उसको ग्राउंड ड्यूटी दीजिए, you can't terminate the service. कई जगह पे ऐसा भी था कि if you are appointed in a particular office, I will give you the name also. Say in Madras High Court, there is one teacher in a private school, and she married, and later on her service was terminated. She was in a private school. She filed a case and matter on the Madras High Court. See, Yes, what is sir. the public policy? One have a natural right and one have a right to marry, and on the ground of marriage, and marriage is for survival of the society. And if one marry and you terminate the service, it is totally against the public policy. Even in private school, see the function of the court. At the same time, in Allahabad High Court, they say women are eligible only for appointment of ministerial office, not to be appointed in a judicial post. Then the Allahabad High Court say in 1990 and ruled that women shall not be eligible to the ministerial or establishment of a civil court subordinate to the High Court is violation of Article 16, 15, 14. Then why women not allowed to appoint? Reason is she is a woman, she is a different type of body, or we can say the biology. In one matter, the advertisement published, the women should not apply. Then the matter went to the court, and the argument on the other side is that the job is there, it is not suited for women, so we not allow the women to come down. Then the question, why you are thinking about whether the job can be discharged by women or not? Leave it to the applicant. If you appoint, then she will do it. If he not like to do this, he will resign it. But before joining, you are thinking that she can't do it. It is not good for a democracy, and it is a discrimination on the ground of gender, and this cannot be tolerated. So, not only in Andhra Pradesh, there is a special reservation for women in a public appointment. In civil service rule was amended. Then one say, and the court says, it is for upliftment of women, and the Justice Sujata Manohar said, in relation to the women in Article 15.3, for centuries, women of this country
have been socially and economically backward. As a result, they are unable to participate in socio-economic activity of the nation on a footing of equality. It is in order to eliminate the socio-economic backwardness of the women and to empower them in a manner that would bring about the effective equality between men and women as per Article 3 was placed. The objective of is strengthen and improve the status of the women. An important limb of this concept of a gender equality is creating job opportunity for women. To say under Article 15.3, it is a special provision that cannot be created, would be cut in a negative way. And it is decided in 1995 by Supreme Court itself. तो ये जो सारी बातें है वो कोर्ट ने तो बोल दिया, 95 में भी बोला, हमारे वहां तो एक कहा कि if she marry without the permission of the authority, she may be terminated. Then court argument took place, say why it is there. Then say women after marriage, women have to manage the household things, and if she is coming to the office, then how the home can be managed. Then argument from the women's side is the woman is no longer content merely a see to the home, expecting the man to earn family. Both are equally entitled and responsible for running the home. Rules should not be operated as a deterrent to such a, and it is necessarily there all posts, excepting those which is due to the physical reason a woman cannot take up, must be available them. Attempts should not be perpetual discrimination would be obliterated. It is also decided in 1985. And there is a good case. Hope you studied so in now we say the Sudha Murti. I hope as a teacher of sociology you are aware that it's now will come in the lesson in standard 10. Last year I appeared in a Hindi examination of standard 10 as per our rule. The Sudha, Narayana Sudha Murti, when she was studying in engineering in Bangalore, and the Tata Motors or a Tata Group company issued an advertisement, they are in need of engineer. And last line was that women did not apply. And the lesson is there. Lesson mane, in lesson in English, one chapter is there in the book, the lesson is there, and she disturbed, and she wrote a postcard to the Tata, J.R.D. Tata. Say, how you cannot allow the women? What is wrong? And she got a message, you are allowed to appear interview and we pay real fare. And when the interview was conducted, she was there. And last, she wrote in book, it is available in standard 10 Hindi book for Gujarati medium, Hindi book for Gujarati medium. So one gentleman was asked, why you dare to write a such type of letter? Say, one have to start. Why it should not start from you? कहीं ना कहीं तो हमें शुरू करना पड़ेगा, तो आपसे क्यों नहीं शुरू करें? And she was selected, and finally she became the head, and she married with the Narayana Murthy. Sudha was a the Maharashtrian lady, and when she married with the Narayana Murthy, then she became the Sudha Murthy, and his son-in-law is going to be I think he is in contesting, he is in the fray of the Prime Minister of where? UK. Are you reading newspaper or not? Or are you reading only what happened to this Kimi Katkar and heroine name? I don't know the name of the heroine also because I not seen the movie. I not seen the movie even though I was young, even though physically I'm a elder one, but mentally I'm a fit. I never see the movie. So read the type of news. Sudha Murthy dare to write a letter. Why we are discriminated? And this is a gender discrimination. You want a person can do work or not.
You are not least concerned with this gender, the biology. Whether he is appointed or she is appointed, it is your least concern. You are concerned with the work. And so that in our constitution, there is a one provision, equal pay for equal work. महिलाओं को कम आमदनी नहीं दी जा सकती है, लेकिन आप जाएंगे जहाँ कंस्ट्रक्शन काम होता है और काम होता है, वहाँ महिलाओं की आमदनी तनख्वाह कम दी जाती है. It is totally illegal, unconstitutional, and exploitative treatment given to the women. महिलाओं को प्रसूति रजाओं का लाभ दिया जाता है. कितने प्राइवेट लोग देते हैं? नहीं देते. Someone say it is too much to bear this expenditure. Then I also suggested that if someone is appointing a woman and give the benefit to the maternity leave, then one can be given such amount as a tax paid to the government. Are you agree with me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Totally agree. Yes, sir. Yes, sir. Then what Yes, sir. happens? Yes, sir. Agree. Yes, sir. I pay some salary to the women on a maternity leave, then the same amount may be deducted from the levy of the tax by the government. So ultimately, the purpose is served. So more and more private people are happy to appoint and allow the women to go on a maternity leave. But who will think? A sociologist can think socially. The other person cannot think, and we have to imbibe some type of ideology to the policy maker. Then it can be work very efficiently and effectively. Now we have a 10 minutes for question answer. The topic is very interesting. I'm thankful to all you. 97 people are suffering my torturing and bear me. So I'm thankful to you all in general and particular to the HRDC and Raval. Now if you have any query, suggestion, deletion, amendment, then I'm here for 10 minutes. Hello, I'm audible, Yes, sir. but I'm not listenable. I can't listening anything from your side. I don't want thank you, good work. Yes, sir. I don't want any compliment. I want some question, Sir, some conclusion. I If have they a question. confuse me, I'm also invite more questions which compel me to think it. Sir, I have a question, if I may. Yeah, if you allow right. me. Welcome, welcome. Sir, the law has many provisions for safeguarding the rights of women. Even then, why do you think that women do not receive justice? What stops us from receiving justice when complaints are made? Justice is a different thing. Women get the justice. First of all, in family, we are giving justice to women. Think sociologically. In No. our society, we are giving justice to the women. Judiciary is the third one. It owes duty to protect the constitution and its value also. No doubt about it. But law cannot function in a vacuum. I earlier mentioned law is an instrument of social change. What law requires, our court is depending on evidence. Now, in evidence, it should be proved against the accused. We see how many persons give the evidence. Sometimes you also found in a newspaper, the rapists are agree to marry the victim and apply in a court, say we are ready to marry, and the case may be dropped out. Yes, Right? sir. Some victims have no any protection sometimes also. So the people are afraid if we give the evidence, then we are at the threat. Sometimes long and lengthy procedure and time span where justice are available.
And justice is available where the judicial mindset in society is needed. Where, you see, it is not correlate with me, the thing. One judge of one bench of Bombay High Court, and I hope you all are agree and you read it. The one judge say there is no any skin to skin contact of a child, so child may be acquitted because it is not covered under the POCSO Act. I hope you have gone through the judgment. Two judgments delivered by the Bombay High Court, the Nagpur bench, and Supreme Court struck down the judgment. Say, if you have skin to skin touch, then I also discussed with our academic group, if someone want to teach the women and have a gloves, where is skin to skin touch? What is the objective of this act? One should not harass, one should not have humiliated, one should not tease it. It doesn't mean that skin to skin touch is needed. Then all purpose is murder. And Supreme Court struck down it, and the judge delivered the judgment, resigned it, and not promoted in a permanency and resigned it. The judge was lady judge. I hope you are aware about the name of her. Are you aware? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what about the common man? The men are not meeting the two ends. How we can understand? So we are poor, we are literate men, not educated men. So justice requires living support. Whether we, let me give you one more example. I may take 2 or 3 more. When this Dhananjay Chatterjee was going to be hanged, and all over India, agitation took place, and this hanging is inhuman, and death penalty should be removed, right? Many processions took place, almost all the big cities, right? Yes. Yes. Then I'm also a social, actually I was a trade unionist, but due to compulsion I switched over towards the academic because my office was closed down, and I switched over to academic 28 years ago. Then I asked many, those who are a part of a procession, फांसी की सजा निर्मूलन करो, उसको बचाओ, ये. Then I asked, where the procession is going on, what is the motto, what is the reason, what is the purpose? They are not knowing. Only they are the paid person in a procession. Then I say, the Dhananjay, what he did? Dhananjay was a watchman in one school in West Bengal, and I hope many people are knowing. And he committed rape, the name of the Hetal, in 1985, where she was studying in standard 8 or 9. In the same classroom, she was raped. And the Dhananjay come to know, if she disclosed, then me may be hanged or me may be penalized. Then he murdered in the same class. And in 1993, the punishment was awarded. But anyway, the punishment was lingering until 2003 or 4, it is finalized to be given. And people are saying Dhananjay would be saved. The death penalty is inhuman. What was done by the person was not taken into consideration. Then and I wrote in one article, there is one debate also going on the TV, and I wrote an article. So the debate took place in the TV. The legal luminary was on this debate. So one person say in a Saudi or a Gulf country, there is a severe punishment, so the crime rate is reduced. And the good legal luminary icon of law say, why we go for a Arab or a Gulf country? Go to the UK, there is no death penalty and crime rate is decreased. Then it poured fuel on me. I got shocked. And I wrote an article the same day and published in a local newspaper. And I say, victimology and human right and victimology go in hand to hand. Okay?
which type of environment we have, whether we have a UK type of mindset of the people or we have a mindset of a crook people. Which type of environment? Suppose you want to sow the seeds of an apple in a barren land, it flourishes, it sprouted? Not at all. If you have a Alfonso mango and sow the seeds in a Kashmir, can it grow? Not at all. So we have a mindset of a crook fellow and want the result come out with happen. And people are supporting the Dhananjay without knowing anything. So how we can go to justice? What is needed? To educate the man. Not only hire the man and go for a procession by someone fund the money and decide and confuse the people and misguide the society. I hope you can be. Thank you, sir, for a very enlightening lecture. Thank you very much.